Moving on, another key item is cash paid to suppliers. So when you pay cash to suppliers, two items from income statement and balance sheet that are impacted are, on income statement your cost of goods sold is impacted and your purchases are impacted, and on balance sheet your inventory is impacted. So जब आप कोई मटेरियल परचेज कर या कोई भी कैश पे करते हैं तो वो कैश किसके अगेंस्ट पे हो रहा होता है? या तो आपने कोई परचेजेस करी होंगी जिसके अगेंस्ट पे हो रहा होगा, या फिर जो है वो आपने कोई सेल्स करी होंगी, कोई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होंगी जिसकी जब आपने परचेजेस करी होंगी तो उसके लिए पे कर रहे होंगे, या फिर जो है वो आपकी इन्वेंट्री में कोई भी चेंज आया होगा। इन्वेंट्री में चेंज क्यों आता है? इन्वेंट्री में चेंज अगेन दो रीजंस की वजह से आएगा, इधर सेल्स की वजह से आएगा, आप सेल करेंगे तो इन्वेंट्री कम होगी, या फिर परचेजेस की वजह से आएगा, इफ यू मेक परचेजेस योर इन्वेंट्री विल गो अप। सो दैट मीन्स फ्रॉम बैलेंस शीट वी विल पिक इन्वेंट्री, and from income statement two accounts impacting this inventory are COGS and purchases, and understanding the linkage between these three should help us arrive at the cash paid to supplier. So again this can simply be done using the income statement and balance sheet items, that is COGS, purchases and inventory. So you know your cost of goods sold, you know purchases, you know beginning inventory and ending inventory from balance sheet and income statement. Within this, if you do not have any item, like for example अगर income statement में purchases नहीं लिखी हुई या income statement के notes में आपको purchases नहीं मिल रही जो कि usually नहीं होती हैं, so you can calculate the purchases using other two items. That is, you take beginning inventory, you take cost of goods sold, you take ending inventory, and using these three items you can easily calculate purchases. So purchases will be equal to ending inventory minus beginning inventory plus cost of goods sold. क्यों? क्योंकि जब आप परचेज करेंगे कोई भी यूनिट्स तो या तो आप उसको सेल कर देंगे, so that means either purchases will be sold, और या फिर वो आपके इन्वेंट्री में जाकर एड अप हो जाएगा, that is your inventory will increase. So that means some portion of purchases will go to COGS and some will impact the change in inventory. So these two combined should give you the total purchases. So from this equation you can find purchases. Now once you have purchases, cost of goods sold, ending and beginning inventory, then you can easily find cash paid to suppliers. So cash paid to supplier will be cost of goods sold plus change in inventory. So जब आप change in inventory और cost of goods sold को account for कर लेंगे, you will arrive at the purchases, that is this number 12163. Now you will compare purchases with accounts payable. क्यों? क्योंकि जब आप cash pay करते हैं तो या तो वो accounts payable को impact करेगा, अगर आप cash pay नहीं कर रहे तो account payable बढ़ जाएंगे, और अगर आप cash pay कर रहे हैं तो account payable decrease हो जाएंगे. Secondly, आप cash pay कर किस चीज के लिए रहे होते हैं? जो आपने purchases करी होती हैं उसके लिए pay कर रहे होते हैं, and that will impact your income statement. So again purchases from supplier minus increase in account payable will give you cash paid to supplier. So simply हमने पिछली example में क्या करा था? पिछली example में we took an income statement item, that was income. So we took income from income statement and then we subtracted increase in current assets to arrive at the cash received amount. When you have an expense, in that case you take expense from income statement, that in this case is purchases, and you subtract increase in accounts payables, and that will give you your cash paid. So accounts payable is current liability. So आप जब इनकम होती है तो इनकम को कंपेयर करते हैं विद करंट एसेट, क्योंकि इनकम इज अ रिसीवेबल, सो इट विल ईदर इम्पैक्ट योर इनकम स्टेटमेंट ऑन इनकम साइड और इट विल इम्पैक्ट योर करंट एसेट. लेकिन जब आपका लाइबिलिटी, जब आपका एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस इज रिलेटेड टू करंट लाइबिलिटी. अनदर की पॉइंट रिमेंबर इज कि अगर मैं इधर से इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस करूंगा, my आंसर विल बी पॉजिटिव. दैट पॉजिटिव डज नॉट मीन इनफ्लो, दैट पॉजिटिव इज द कैश पेड, सो दैट इज एन आउटफ्लो. अगर मुझे इसमें नेगेटिव आंसर ही चाहिए, सो सिंपली व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड अप अकाउंटिंग
add up current liabilities or accounts payable. So आप इसको add करें या subtract करें, that will impact your cash paid. So this cash paid, remember, is not an inflow, this is an outflow. ये सिर्फ फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए. जब आप लेस करेंगे इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, दिस वुडंट गेट, दिस पॉजिटिव नंबर would mean an actually an outflow, that is cash paid to suppliers. This is not cash received. Positive does not mean it is a receipt. Or simply speaking, purchases from suppliers less increase in account payable is cash paid to supplier. So further simplifying it. So first step is finding out purchases. Once you have these purchases, then you can use the purchases and accounts payable to come at cash paid to supplier. So again, cash पे जो भी transaction record हो रही है, that would either be having some impact from income statement or from balance sheet. और दोनों का link बनाकर ही you will be able to calculate cash paid. To calculate cash paid to suppliers in this question, paid to its suppliers. So in order to calculate cash, we need two items, that is change in accounts payable and purchases. And to calculate purchases, we again need two items, that is COGS, cost of goods sold, and change in inventory. So reported cost of goods sold for the year 100 million. So that means 100 million will be your purchases. But inventory declined by 6 million. That means from this 100 million, 6 million was used from the existing inventory. So अगर 6 million existing inventory से use हुआ था, तो purchases कितनी होंगी? -6, that is 94 million. So your purchases will be 94 million. आपने total 100 million की वर्थ की सेल करी है, 100 मिलियन वर्थ का स्टॉक सेल करा है. उस 100 मिलियन में से 6 मिलियन वाज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी. दैट मींस आपने खरीदा कितना ड्यूरिंग द ईयर? 94 मिलियन. सो 94 मिलियन विल बी योर परचेजेस. सो 94 मिलियन इज योर परचेजेस एंड योर अकाउंट्स पेएबल्स डिक्रीज बाय 2 मिलियन. So that means 94 million were purchases. तो कस्टमर को आपने पे कितना करना चाहिए था? आपको पे करना चाहिए था 94 million. Secondly, accounts payable, your liability has decreased by 2 million. That means आपने कुछ पुराने पैसे भी पे करे. That's why your accounts payable has decreased. So that means you have paid some older amounts worth 2 million. So in addition to this 94 million, you have also paid 2 million. So that means total amount that you paid was 96 million, and hence A should be your answer.